बट आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन सब बॉडी पार्ट्स, उन सब बॉडी ऑर्गन्स में जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है वो है ब्लड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। बट जो ल्यूकीमिया होता है सर, वो वाइट ब्लड सेल के ही एक्स्ट्रा एडिशनल जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उस वजह से होता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जब नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी हम कराते हैं तो भी हम ल्यूकीमिया पकड़ सकते हैं इफ द डब्ल्यूसी काउंट इज हाई। which is responsible to control the bleeding in our body, prevent bleeding in the body. तो डेंगू में सर ऐसा क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू हो जाता है? कहीं से ब्लीडिंग तो इंसान की हो नहीं रही है, राइट? तो प्लेटलेट गिरता कैसे है उसमें? प्लाज्मा जो है कि बॉडी का लिक्विड फॉर्म है जिसमें कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर इन बेबीज देयर द इम्यून सिस्टम डजंट डेवलप प्रॉपरली, सो immune protein or immune cell like T cells, they are not properly functioning and they are making person to prone for infection. Sir, being here at Apollo, what are the most common blood disorders जो आप रेगुलर बेसिस पर इनकाउंटर करते हैं? तो आप ये कह रहे हैं जो लिम्फ नोड्स होता है वो जितने भी एबनॉर्मल सेल्स हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे स्वेलिंग हो जाती है। ल्यूकीमिया, देखिए, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा सारे एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। हर एज ग्रुप हाँ, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, चाइल्डहुड लिम्फोमा, दे आर वन ऑफ द हाईली क्यूरेबल डिजीजेज। थोड़ा सा समझ सकते हैं सर कि क्या ट्रीटमेंट रहता है, कितना लंबा रहता है इसका जर्नी? क्या आप आपसे समझ सकते हैं सर कि क्या सर्वाइवल रेट रहता है ब्लड कैंसर के? अब देखिए कि सर्वाइवल रेट। Hello and welcome back to NH Talkshow, a show where we explore the world of health, wellness and medical breakthrough. तो अब तक के पॉडकास्ट में आपने देखा कि हम एक बॉडी ऑर्गन, एक बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चर्चा करते रहे। बट आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन सब बॉडी पार्ट्स, उन सब बॉडी ऑर्गन्स में जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है वो है ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है? 1.2 बिलियन केसेस आर रजिस्टर्ड विच आर एनीमिक पेशेंट अराउंड द वर्ल्ड। क्या होता है रेड ब्लड सेल्स, क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स, क्या ब्लड से एनर्जी मिलती है, कितनी मिलती है? इन्हीं सब विषय पर डिस्कशन करने के लिए हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर शिशिर सेठ, Senior Consultant Hematologist at Apollo New Delhi. So welcome Dr. Shishir, and we will start with basics. तो आप हमें समझाएं कि हेमेटोलॉजी क्या होती है? हेमेटोलॉजी ब्लड रिलेटेड डिजीजेज को डायग्नोस और उसको ट्रीटमेंट करने की साइंस है। हमारा ब्लड, उसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं। सेलुलर कंपोनेंट जिसमें सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इसके अलावा एक कंपोनेंट जो प्लाज्मा कंपोनेंट होता है जिसमें कि तमाम सारे प्रोटीन्स डिजॉल्व रहते हैं, वेरियस फैक्टर्स एंड मिनरल्स दे आर dissolve in that, and that is in fluid form. And this blood is responsible for various functions in our body, like hemoglobin that provide oxygen to various organs, and so when there is a low hemoglobin, tissue oxygenation suffers. People may feel fatigue, tiredness. When sometime hemoglobin goes up, in such situation blood becomes thick and can't means flow properly in various organs. Then also blood circulation is hampered and various symptoms like
unexplained fatigue, headache, that is there. Sometimes blood becomes so thick that means it can get clot. So people may develop increased risk of various blood clot like stroke, sometimes heart attack, sometimes DVT or abdomen vein thrombosis. Another cell that is WBC. There are various WBC in the body and they are responsible for primarily providing defense from various infection or external environment. The first most cell that is called neutrophil, which is primary defense in our body for various bacteria, fungus, and various infections. So, in response to various infection, body grow more and more neutrophil so that WBC count goes up to fight the infection, and that is a natural phenomenon. Sometimes when these WBC they develop some diseases like they are very low because of various reasons, body immunity goes down and people are more prone for infection. Sometimes in these WBC, cancerous growth can develop that is called leukemia, and in which abnormal WBC forms and normal WBC doesn't form, so that the whatsoever WBC are they are dysfunctional and not able to perform their function. So people are means again prone for various infection. Leukemia also have various type, depends how rapidly they are growing, and second thing what is the line cell that is disturbed. बट जो ल्यूकीमिया होता है सर वो वाइट ब्लड सेल के ही एक्स्ट्रा एडिशनल जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उस वजह से होता है जी, ओके ल्यूकीमिया में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और उनके प्रिकर्सर्स हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ से होता है. तो जो अगर हम देखें सेल लाइन के अकॉर्डिंगली तो ल्यूकीमिया के लिए दो तरीके की सेल लाइन होती हैं. एक लिम्फोइड सेल जो कि लिम्फोसाइट बनाते हैं जो हमारे शरीर में या तो वेरियस इम्यूनोग्लोबिन्स बना के इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या various type of cells like T cells, they provide immunity to our body. So when the leukemia develop in all these cells, so they are called lymphoid leukemia or sometime lymphoma. They may be acute leukemia where the tumor is growing too fast, and chronic leukemia where the tumor grow very slowly, and sometimes means these chronic leukemia they are identified just by routine test because of some other reason, and we are seeing okay WBC is high, so when we are investigating so this problem can be identified. तो आप कह रहे हैं कि जब नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी हम कराते हैं तो भी हम ल्यूकीमिया पकड़ सकते हैं इफ द WC काउंट इज हाई देन यूजुअल. That is means more common with chronic leukemia because these are slow growing and they develop many months, sometime for few years before any symptom develop. So that's why they can be detected by various routine investigations a long back before any symptom develop. ओके श्योर. तो हमने आरबीसी के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, डब्ल्यूसी के बारे में भी समझ लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट which is plasma. Plasma क्या होता है? Another cell is a platelet. Platelet, sorry. These platelet which is responsible to control the bleeding in our body, prevent bleeding in the body. And we must have heard means problems because of platelet, especially low platelet means many times we had seen with various infection, especially dengue infection where platelet goes
alarmingly low, Low. and patient develop risk of bleeding. And so, uh, in which patient require platelet transfusion. Apart from that, there is a one common condition which is called ITP, that is a immune thrombocytopenic purpura, where the platelet goes down because body immune function destroying the body own cell. In such situation, people have a low platelet, and despite giving platelet transfusion, these people do not have improvement in platelet count. In these conditions, generally we are giving various immunosuppressive therapy to control the immune dysregulation, which allow means platelet to uh, regrow again in the blood. तो डेंगू में सर ऐसा क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू हो जाता है? कहीं से ब्लीडिंग तो इंसान की हो नहीं रही है, राइट? तो प्लेटलेट गिरता कैसे है उसमें? देखिए, डेंगू के इन्फेक्शन में जो वायरस होता है वो एक तो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और दूसरा जो है कि इवन टू सम एक्सटेंट प्लेटलेट के प्रोडक्शन को भी सप्रेस कर देता है। डेंगू इन्फेक्शन एक कॉमन प्रोटोटाइप है। इसके अलावा भी वेरियस वायरल इन्फेक्शन, तमाम सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब वो सीवियर अमाउंट में होते हैं, उस समय हम जो है कि इस तरीके की सिचुएशन देख सकते हैं जहां प्लेटलेट कम हो गए हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो गए हैं, इवन हीमोग्लोबिन आल्सो गोज डाउन, एंड पेशेंट में हैव वेरियस मैनिफेस्टेशन जैसे कि ब्लीडिंग होना, फीवर चलना और बहुत ज़्यादा कमजोरी होना। ये सारी चीज़ें ब्लड की डिजीज में होती कॉमन है। प्लाज्मा क्या होता है सर? प्लाज्मा जो है कि बॉडी का लिक्विड फॉर्म है जिसमें कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन blood point of view, that is immunoglobulin, which provide the immunity to our body and protect us from the infection. When there is a dysfunction of these proteins, people develop various type of infections. Some of such proteins, they are defined at early childhood, that is called immunodeficiency syndrome. Just like means in adult sometime means because of HIV virus immune dysfunction happen. Same type means because of some genetic disorder in babies, there the immune system doesn't develop properly. So immune protein or immune cell like T cells, they are not properly functioning, and they are making person to prone for infection. Okay. Sir, being here at Apollo, what are the most common blood disorders जो आप रेगुलर बेसिस पर एनकाउंटर करते हैं? देखिए, वन ऑफ द कॉमनेस्ट ब्लड डिसऑर्डर दैट इज एनीमिया। दैट इज एनीमिया। दैट इज मीन्स आई विल से कि नियरली 30-40% people, especially the females and children who are suffer from anemia, and the commonest cause of anemia is still iron deficiency anemia because of either poor nutrition or because of some other problems like means some bleeding, uh, in females heavy periods, in means Sure. males there is some sort of intestinal bleed which can give to anemia. That is one of the commonest blood disorder. In anemia, apart from iron deficiency anemia, there is something called B12 and folate deficiency that is also seen to some situations. Apart from that, some anemia that is means because of blood disease, uh, like something called autoimmune hemolytic anemia, where the body immunity that is destroying body own cells and leading to anemia. Sometimes bone marrow doesn't work properly, that is called bone marrow failure syndrome. One of the prototype that is aplastic anemia, where body doesn't form blood properly, so all the blood constituent like hemoglobin, WBC and platelets, they are low, and they are making person very weak, susceptible for infection and bleeding, and this is one of the serious disease
if left means untreated, people can't survive means more than few months or maximum a year. तो ये तो हो गया सर एनीमिया एनीमिया को छोड़कर भी क्या ब्लड डिसऑर्डर्स यू सेड दैट 30% ऑफ इट 30% राइट ऑफ इट द पेशेंट दैट यू सी ऑन डेली बेसिस देयर एनीमिक बट इसके अलावा क्या किस तरीके के पेशेंट्स और इसके आते हैं अलावा जो है कि one of the commonest thing that is a various type of blood cancer. If we say blood cancer, so we can categorize blood cancer in three types. First one is leukemia, ल्यूकीमिया where the cancerous cell they are flowing in blood, and just by examination of blood, that is a CVC test, and that can identify that leukemia is there. Apart from leukemia, there is another cancer that is called lymphoma, where the various lymph node in our neck, armpit, groin, they get enlarged, and people have a various type of manifestation like fever, weight loss because of swelling, means they have a pain, and sometimes the swelling they are pressing on various vital organ like kidney, uh, so that people may have a urinary retention, uh, or sometimes they are pressing on bile duct, they are means causing jaundice. Sometimes they are pressing on brain or spinal cord or nerves, so they may cause nerve dysfunction. So these are the lymphoma where the blood cancerous cells they uh, grouped at a place and forming swelling. तो आप ये कह रहे हैं जो लिम्फ नोड्स होता है वो जितने भी एबनॉर्मल सेल्स हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे स्वेलिंग हो जाती है इट कैन बी इन द ऑर्गन्स ओनली और इट कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी Basically, most of time we are seeing in various blood organs. इन ब्लड ऑर्गन्स Yeah, so blood organ means blood form in the bone marrow. Then means these blood cells travel in a form of blood, and they are having means some organ like lymph node, which is means meant to protect our body from various infection, and they are seeing all around. But mainly externally, we can see in the neck, in the armpit, and means in the groin. So even whenever we are developing any infection in these area, these lymph node get swollen, sometimes painful. That is a normal phenomena. But when there is means cancerous cell deposited in the organ, they can get swollen, and sometimes the swelling is painless swelling. Apart from that, liver and spleen, that is another blood organ where these blood cancerous cell can accumulate, and they can cause means swelling of these organs. ओके और जो तीसरा भी आप बता रहे थे ना तीसरे तीसरा जो है कि कैंसर जो ब्लड का है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा. That is generated from the cells that is called plasma cell, which is responsible to provide immunity by producing various immunoglobulin in our body. These cells mainly reside in the uh, bone marrow where the blood forms, and when these cells develop cancer, they are producing abnormal protein which can be detected in blood. Sometimes they filtered through kidney, they can be detected in urine. They usually manifest in form of various bony pain, sometimes bone fracture, kidney problem, and sometimes drop in hemoglobin, drop in platelet, and high calcium. These diseases very common in advanced age group. In Indian, we are seeing means ranging from 40, 50 to 70, 70, 80. In Western world, that is a usually disease of elderly. ओके एंड the first two cancers the blood cancers that you mentioned उसमें क्या एज रहती है सर कितना जल्दी आज की डेट में आपको दिखता है कि लोगों को ये हो रहा है
ल्यूकीमिया टू बी देखिए प्रिसाइज? ल्यूकीमिया और लिम्फोमा सारे एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। हर एज ग्रुप में होते हाँ, हैं। चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, चाइल्डहुड लिम्फोमा, दे आर वन ऑफ द हाईली क्योरेबल डिजीजेज, है ना, जिनको हम क्योर कर सकते हैं। एंड virtually these are the diseases which means having good survival history, and people are living means their normal life after proper treatment of these cancer. थोड़ा सा समझ सकते हैं सर कि क्या ट्रीटमेंट रहता है, कितना लंबा रहता है इसका जर्नी? देखिए अभी कैंसर के ट्रीटमेंट में तमाम सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, जी। है ना। द टिपिकल ट्रीटमेंट फॉर एनी कैंसर वाज कीमोथेरेपी, which kills the cancerous cell as well as normal cells. Now we had developed various other tools to take care of these cancer, like means various targeted therapy, which damage only particular target and killing mainly cancer cell. Other cells are relatively spared. Immunotherapy, which means target any immune point of these cancer cell, and specifically targeting these cancer cell only and sparing normal cells. So these are the two major newer treatment for dealing uh, all these cancer. You're only talking about blood cancers, right? Leukemia and lymphomas. Means not only leukemia lymphoma, they are also means available for various other cancers, also target various targeted therapy or various immunological therapy. Another treatment means what we had heard means nowadays very commonly, that is CAR T cell therapy. That is also one of the new advantage, new advancement in these blood cancer treatment, especially the available therapy that is for various lymphoma and leukemia, especially of B cell origin. And now the upcoming is a multiple myeloma CAR T cell therapy. So that is generally at present treated difficult to treat means leukemia and lymphoma, Lymphoma. who are not responding to the frontline usual treatment. ओके, और क्या And इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है सर? इसका ट्रीटमेंट मींस डिफरेंट डिजीज का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और स्टेज भी मेरे जनरली ख्याल से। जनरली जो है कि हम्म, ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है, हाँ, फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर, एंड आफ्टर दैट many of the people they require low dose maintenance therapy for some time. ओके। इसमें जो स्टेज होती है 1 2 3 4, इसमें भी क्या ऐसी ये रहती है? देखिए जो है कि ब्लड कैंसर में एक फॉर्मल स्टेज जैसे कि और दूसरे सॉलिड कैंसर्स में होती है, ये नहीं होती है, नहीं होती क्योंकि है। जिस तरीके से ब्लड हमारे शरीर में पूरे शरीर में फ्लो कर रहा होता है, उसी तरीके से जो कैंसर सेल्स भी होते हैं वो ब्लड के साथ पूरे शरीर में फ्लो कर रहे होते हैं। तो एक्सेप्ट लिम्फोमा, जो दूसरे कैंसर्स हैं लाइक ल्यूकीमिया एंड माइलोमा, ये इनका क्या बायोलॉजिकल नेचर्स है, उसके ऊपर जो है इनकी स्टेजिंग डिसाइड होती है। द वन ऑफ द गुड थिंग इज के दीज टाइप ऑफ कैंसर दे आर मींस highly responding to various chemotherapy or immunotherapy, and there is a high cure rate for various type of blood cancer. क्या आप आपसे समझ सकते हैं सर कि क्या सर्वाइवल रेट रहता है ब्लड कैंसर के अब देखिए केसेस कि में? सर्वाइवल रेट डिफरेंट ब्लड कैंसर्स में डिफरेंट सर्वाइवल तो रेट है। ल्यूकीमिया का समझते हैं कि क्या रहता देखिए है? अब ल्यूकीमिया में भी जैसे क्रॉनिक ल्यूकीमिया होते हैं, है ना, क्रॉनिक का मतलब स्लो ग्रोइंग, सो दे ग्रो फॉर मेनी इयर्स। वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज समथिंग कॉल्ड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, वेयर वी आर गिविंग one oral tablet that is a targeted therapy, and that people have to take for many years, sometime means for lifetime, and that become like another disease, like we can compare with the diabetes and hypertension, where they have to take means medicine for long time to keep disease in control, monitor the disease parameter, and most of the people they live their normal life. ओके। Okay. Same thing for other means chronic leukemia like chronic lymphoid leukemia. They also require means either targeted agent, immunotherapy, or sometimes chemotherapy, and they live means relatively
for many years with the disease. In myeloma also people require means a treatment for some time, then disease remain in control, then again means develop relapse. And with myeloma also people nowadays on average living a decade or बट even sometime longer. ओके बट कई बार ये ऐसा होता है ना सर, जो नॉर्मल कैंसर्स के बारे में हम सुनते हैं उसमें सर्वाइवल रेट काफी कम रहता है, तो क्या आप कुछ फिगर बता सकते हैं कि ब्लड कैंसर्स में एक होलिस्टिक फिगर कि क्या रहता है, कितना परसेंट? अब देखिए जो है कि अगर हम बात करें acute leukemia की, जी acute leukemia means acute myeloid leukemia, which is the one of the serious disease, where means I will say कि when we are treating such patient, out of 10, 5 to 7 survive, 3 to 4 they do not mean survive for long. Either their disease do not respond to the treatment or their disease respond to treatment, but that response doesn't last for long. So that is a story for acute myeloid leukemia, and in such diseases treatment is quite intensive, and many of the patients they require a bone marrow transplant to check the disease and cure the disease. Acute lymphoid leukemia, that is another type of acute leukemia, more common in childhood, having high survival rate. Okay. In childhood means we can say around 80% people survive for long time or get cured. And adult, the acute lymphoblastic leukemia, generally survival age means in tune of 50 to 70%. So the new therapy, they are developing more targeted drug, they are coming, and like we are told the upcoming therapy, that is CAR T cell therapy, they are means available in difficult to treat leukemia and giving some hope to the patient who have means such type of disease. राइट अब समझते हैं सर, ब्लड बनता कैसे है हमें, मतलब बचपन में ऑब्वियसली सिखाया गया था बोन मैरो प्लेज अ मेजर रोल, तो बट फिर भी फॉर आवर ऑडियंस जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बोन मैरो. देखिए बोन मैरो एक जो टिश्यू है वो हमारी हड्डियों के अंदर जो है खोखली स्पेस होती है, जिसके अंदर एक स्पंजी टिश्यू जिसको बोन मैरो बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द ब्लड. सो उसके अंदर जो है कि जो ब्लड सेल्स के सीड्स होते हैं जिनको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं, दे डिवाइड इन मोर एंड मोर डिफरेंशिएटेड सेल्स. They are forming WBC, they are forming RBC, they are forming platelet, they are forming lymphocyte, and they get mature, and then they travel in the blood and producing various their function. तो ये बट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है सर, उसकी क्या सर्जरी रहती है? देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट है ना, जिसमें कि हम डैमेज्ड और डिसफंक्शनल बोन मैरो को एक नॉर्मल हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस करते हैं. तो बट जैसे कि वो हड्डियों के अंदर होता है ना सर, तो क्या उसका सर्जरी का क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए नॉर्मली जो है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है. ओके. है ना. इसमें हम करते क्या हैं कि हम पेशेंट को तमाम तरीके की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन देके उसका जो ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम है, बोन मैरो है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके. उनकी बॉडी में इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि वो फॉरेन सेल्स को एक्सेप्ट कर सकें, और इसके बाद हम डोनर से स्टेम सेल्स कलेक्ट करके वो स्टेम सेल्स पेशेंट को जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसी तरीके से दे देते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं. हाँ.
तो ये सर्जरी नहीं है? ये सर्जरी नहीं है। ओके। धीरे धीरे करके दीज स्टेम सेल्स दे आर जस्ट लाइक ग्रोइंग, जैसे कि हम खेत में बीज डालते हैं, उस समय के बाद वो उग के पौधा बनाते हैं। इसी तरीके से ब्लड स्टेम सेल्स भी जो है वो धीरे धीरे बोन के अंदर जाके सेटल होके वहां पे ग्रो करके फिर ब्लड को जनरेट करते हैं। इसमें नॉर्मली जो है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 2 हफ्ते का टाइम लगता है, जब जो है कि these stem cells they become active and forming the blood cells. How we are collecting the stem cells? जनरली जो है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमको डोनर की जरूरत होती है ना। ये डोनर नॉर्मली फैमिली से भाई बहन होते हैं, क्योंकि भाई बहन का ही जो है कि जेनेटिक कन्फिग्रेशन जो पेशेंट से मिलता है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड HLA टाइपिंग, है ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, which is responsible to provide the viability of hematopoietic cells, blood forming cells, कि they will survive in the body and they will not create much reaction. तो HLA मैचिंग होना जरूरी है पेशेंट एंड डोनर में। तो most of time we are getting from the family donor. Sometime family donor में नहीं होता है, तो we are searching through various national and international registry. कई बार उसमें हमको डोनर मिल जाता है, उससे हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करके जो है पेशेंट के लिए यूज करते हैं। Sometime means we are not getting full match donor, and if the condition is like this कि patient can't survive or their outcome they are very bad without transplant, so we are selecting half match transplant, that is called haploidentical transplant. With the advancement of science, this half match transplant is also giving very good result. They are not means as similar as means full match transplant, but means they are having relatively good result nowadays. Okay. So they are also considered where the transplant is the only option, and if we don't have means any good match donor, so half match transplant can be done. And generally half match donor that is available in the family, because the parents and their children they are definitely half match. Most of time their sibling they are half match. So by this type of technique, virtually almost everyone have a donor. बट ये होता वो ब्लड के थ्रू ही है, आप ब्लड निकालते हैं? देखिए जो है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है अभी उसमें भी चेंजेज आए हैं। जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो ये टिपिकली बोन मैरो से कलेक्ट करते थे हम स्टेम सेल्स। अब जो है कि देयर आर वेरियस एडवांसेस इन दिस फील्ड आल्सो, है ना। तो हम जो है कि कुछ स्टिमुलेंट देके जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं उनको जो है कि हम ब्लड में लेके आते हैं, और फिर ब्लड को जिस तरीके से हम प्लेटलेट को फिल्टर करके प्लेटलेट कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ये स्टेम सेल्स को उस मशीन में फिल्टर करके उससे हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, और फिर ये स्टेम सेल्स फिर फर्दर ट्रांसप्लांट के लिए यूज होते हैं।